ओके। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और मैं आप लोगों के सामने कुछ योग के दर्शन का ज्ञान, कुछ सांख्य दर्शन का ज्ञान रखूंगा और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले मैं अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट की बात करता हूँ आप लोगों से। अपने जीवन का एक बहुत ही विराट एक्सपीरियंस, अमूल्य एक्सपीरियंस समय को लेकर। कलकत्ते में एक गली है पुराने कलकत्ते में जिसका नाम है पोलॉक स्ट्रीट। उस पोलॉक स्ट्रीट में एक जैन मंदिर है जो कि गुजराती कम्युनिटी का मंदिर है। तो आज से कई साल पहले, शायद 7 8 10 साल पहले, मेरे कुछ मित्र वहां पर जा रहे थे दो मुनियों से मिलने। दो मुनि आके ठहरे हुए थे वहां पर, तो मैं भी साथ में गया। और वहां पर जब उनके सामने हम लोग प्रस्तुत हुए, उन्होंने बैठने को कहा, बैठे। तो मेरे दोस्तों ने अपना परिचय दिया और जो उनको पूछना था पूछा। तो मेरे को भी लगा मैं भी पूछता हूं। तो मैंने एक प्रश्न किया उन दोनों मुनियों से। मैंने ये कहा कि आप लोग जैन मुनि हैं, आपके शास्त्रों के हिसाब से सतयुग कब शुरू होने वाला है? तो उनमें से एक मुनि ने मेरे को उत्तर दिया, बोले आप पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि युग, समय, टाइम कहां पर है? आपके अंदर चल रहा है कि आपके बाहर चल रहा है? मैंने थोड़ा चिंतन किया, मुझे लगा बहुत गहरा सवाल पूछा गया है बस। और जब तक मैं जवाब सोचूं, बनाऊं और उनको दूं, उन्होंने आगे बोलना चालू किया। उन्होंने कहा कि अगर समय, काल, टाइम आपके अंदर है तो आपको अभी, इस जगह, इस वक्त, इस समय अपने अंदर सतयुग चालू करने से कौन रोक रहा है? और अगर आपका ये समय अंदर नहीं है, बाहर चल रहा है, तो जब सबके लिए आएगा तब आपके लिए भी आएगा। अब वो चाहे 3,000 साल में आए, 30,000 साल में आए, 3 लाख साल में आए, 3 करोड़ साल में आए, या कितने भी बाद आए, आपको क्या फर्क पड़ता है? समय तो आपके बाहर चल रहा है। जब सबके लिए समय होगा तब आपके लिए भी होगा। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गया वहां पर। मैंने कहा कि ये तो मेरे कल्पना के बाहर का उत्तर था जो उन्होंने मुझे दिया। और मैंने वहीं बैठे हुए, मैं उनके सामने बैठा हुआ था नीचे फर्श पे पलथी मार के। मैंने वहीं बैठे हुए निर्णय लिया कि समय है मेरे अंदर और मैं अपने जीवन का सतयुग अभी यहां प्रारंभ करता हूं। और जब मैं खड़ा हुआ वहां से, मैं सतयुग में खड़ा हुआ। ये मेरा डिसीजन था कि मैं सतयुग में हूं और समय मेरे अंदर है। इस बात को करीब 7 8 10 साल हो गए। तो मैं देखता हूं कि सिर्फ इस डिसीजन के कारण मेरी दुनिया अपने आप बदलने लग गई। मेरी सोच, मेरा ज्ञान, मेरी संगत, मेरा हिंदुत्व का परिचय, धर्मों का परिचय, ईश्वर कौन, भगवान कौन, इंसान कौन, ये सब राज खुलने लग गए अपने आप। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को गुरु बनाया पिछले 7 8 10 सालों में। जब मैंने गुरु बनाया था तब मेरे अंदर असंतुष्टता थी। अब जब मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, मैंने सिर्फ निर्णय लिया कि समय मेरे अंदर और मैं अभी सतयुग में प्रवेश किया हूं। बस इस निर्णय ने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरे अंदर का गुरु चालू हो गया। मेरा आदि गुरु चालू हो गया। वो मुझे हर पल, हर क्षण, हर जगह रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। तो जब मैंने देखा कि मेरे अंदर ये एक आदि गुरु, आदि मतलब अनंत काल पहले, जो टाइम के पार है, वहां से गुरु तत्व आ रहा है। और क्योंकि मैंने अपने डिसीजन लिया कि टाइम मेरे अंदर है, तो मैं खुद सतयुग में प्रवेश कर गया।
तो मैंने सोचना चालू किया कि ये समय क्या है, ये टाइम क्या है। और इतना बड़ा परिवर्तन जादू की तरह, एक चमत्कार की तरह अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर आरंभ हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब कृष्णा ने, जो मेरे टीम की मेंबर है, उसने जब प्रपोज किया कि सर व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट और इसको कैसे बेहतर किया जाए, तो मेरे मन में आया कि ठीक है, ये एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण जो लोग सुनना चाहते हैं उनको देते हैं, और देखते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा समय को लेकर। एक जो युग अभी तक बाहर नहीं है वो मेरे लिए है। दूसरा, जो आदि गुरु हम सबके अंदर है लेकिन सोया हुआ है, वो मेरे अंदर इस निर्णय से जाग गया। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी यहाँ पर हम करीब 10 जन हैं, मेरे को छोड़ के 9 जन हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए कि समय आपके लिए क्या है, और समय पे काबू पा लेने से आपका क्या लाभ है। तो हम सुनते हैं एक एक करके कि समय क्या है आपके दृष्टिकोण से, और समय को बस में करने से आपको क्या फायदा है। तो थोड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाएगा, फिर मैं उसी को लेकर और जो मैंने कहा उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश जी से। आप प्लीज बताइए कि आपके नजरों में समय क्या है, और समय पे काबू पा लेने से, समय को मैनेज कर लेने से आपका क्या लाभ है। समय के बारे में ज्यादा मेरे को इसका एक ज्ञान नहीं है, समय क्या है, लेकिन इसके फायदे जरूर मैं कह सकता हूँ। समय मतलब एक ऑपरेशन शब्द को कहता था कि टाइम इज, वो कुछ एक एग्जांपल देता था, वर्ल्ड इज अ कैनवास एंड वी आर पासिंग थ्रू दैट कैनवास। समय एकदम निश्चित है, मतलब एकदम फिक्स है। वो मतलब चलता नहीं है, समय नहीं चलता है, हम चल रहे हैं समय के पर्दे के पीछे, सामने, मतलब ओके। हम चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ कहा था। आप अगर अपने चलने को रोक सकते हैं तो क्या समय आपके बस में आ जाएगा। आ जाएगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं आपको इसको। हाँ हाँ। पतंजलि ने योग सूत्रों में सेकंड सूत्र में डिफाइन किया है कि योग क्या है, और जहां वो कहते हैं कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। निरोध मतलब स्टॉप करना है, वृत्तियां मतलब चेंज, माइंड का मॉडिफिकेशन, माइंड का बदलाव, उसको हमको रोक देना है। तो जब हम चित्त के फ्लक्चुएशन को रोक देते हैं तब हमारा योग हो जाता है। योग हो जाता है मतलब तब हम अंधकार से कंप्लीट रोशनी में आ जाते हैं, तब हम आत्मा से परमात्मा में आ जाते हैं, तब हम फाइनाइट से इनफाइनाइट में आ जाते हैं, तब हम इंडिविजुअल से यूनिवर्सल में आ जाते हैं। तो हमारे अंदर का पुरुष तत्व, आत्मा तत्व, सोल तत्व, ये फुल्ली रियलाइज हो जाता है 100%। और प्रकृति का रोल खत्म हो जाता है। प्रकृति के अंदर 3 रोल रहते हैं, एक फॉर्म, रूप का, एक बदलाव का, और बिना रूप का, निराकार का। ये तीनों चीजें आपको प्रकृति में मिलेंगी। जैसे हवा जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। आप मेरे को देख रहे हैं अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो मोबाइल का भी रूप है, लैपटॉप का भी रूप है, और मेरा भी एक रूप है। और ये रूप एक तरह स्थिर नहीं रहता है, ये बदलता रहता है हर सेकंड। कुछ नया आता रहता है, कुछ पुराना जाता रहता है। तो ये है रजस, ये है बदलाव। तो हम सत्व, रजस और तमस, सत्व मतलब फॉर्मलेस, रजस मतलब चेंज ऑफ फॉर्म, और तमस मतलब फॉर्म। हम इन 3 के बीच में ही नाचते रहते हैं। यही हम हैं, प्राकृतिक तौर पे यही हम हैं। और आप अपनी दुनिया को किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए, चाहे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए। आप अपने खून का हिस्सा माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देख लीजिए, आपको वहां मूवमेंट दिखेगा, चेंज दिखेगा।
कुछ रंग दिखेगा, कुछ रूप दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप फिजिक्स में हैं, फिजिसिस्ट हैं, आप एक एटम को तोड़ के देख लीजिए, आपको उसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग दिखेंगे, न्यूक्लियस मूविंग नहीं दिखेगा। न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन दिखेंगे, न्यूट्रॉन दिखेंगे। दोनों तामसिक हैं, दोनों को फॉर्म है, दोनों को शेप है। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप है वो सत्व है, वो निराकार है। तो आपको उसमें फॉर्म, फॉर्मलेस और चेंज ऑफ फॉर्म तीनों दिखेगा। आप ब्रह्मांड को देख लीजिए ऊपर, रात को छत पे चढ़ जाइए, ब्रह्मांड को देखिए, आपको ब्रह्मांड में बहुत तारे दिखेंगे और आपको ब्रह्मांड में कुछ चलता हुआ भी दिखेगा, हो सकता है चांद चलता हुआ दिखे। और आपको ब्रह्मांड में कुछ नहीं भी दिखेगा, जो गैप है, जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वो खाली दिखेगा। तो प्रकृति की ये तीन सच्चाइयां हैं। लेकिन ये तीन सच्चाइयां देखने वाला कौन है, दृष्टा कौन है? वो दृष्टा है आत्मा, वो दृष्टा है पुरुष, वो दृष्टा है सोल। तो जब आप इन तीन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तब आप सोल रियलाइज स्टेट में आ जाते हैं। आप ह्यूमन एवोल्यूशन के हाईएस्ट स्टेट में आ जाते हैं। आपके अंदर का ईश्वर भगवान जाग जाता है। आपके अंदर वो आदि गुरु आ जाता है, जो आपको पूरा मार्ग दिखा के निकाल के ले जाता है बाहर। तो मैं जो कह रहा था कि हम लोग टाइम को समझे नहीं। हमको कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में समझाया गया फिलोसॉफिकली कि टाइम क्या है? हमको कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में फिलोसॉफिकली समझाया गया कि लाइफ क्या है? हमको कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में फिलोसॉफिकली ये समझाया गया कि माइंड क्या है? टाइम, लाइफ और माइंड, ये तीनों एक ही हैं। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर बदलाव हो रहा है चित्त में, तभी चित्त है। अगर चित्त में कोई बदलाव नहीं है तो चित्त नहीं है वहां पर। वो चित्त का काम खत्म हो गया, चित्त वहां से चला गया। तो अगर कुछ भी बदलाव हम रजिस्टर कर रहे हैं अपने चित्त में, तभी समय है। अगर हम अपने चित्त में कोई बदलाव रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो समय खड़ा है वहां पर, समय रुक गया है वहां पर, समय बढ़ नहीं रहा आगे, वहां चित्त नहीं है फिर। और जहां पे चित्त नहीं है और चित्त की वृत्तियां नहीं है, वहां पे परम योग है। वहां पे आप साक्षात ईश्वर है, साक्षात पुरुष है, साक्षात आत्मा है, साक्षात परमात्मा है। और जीवन क्या है? मन का चलना ही जीवन है। समय का चलना मन है, मन का चलना जीवन है। आपका मन अगर चलना बंद कर दे तो आपके जीवन का परिवर्तन बंद हो जाए। आपका जीवन का परिवर्तन बंद हो जाए मतलब आपका जीवन का चलना बंद हो जाए। अगर आपका जीवन का चलना बंद हो जाए तो आपके शरीर का बूढ़ा होना बंद हो जाएगा, आपके अंदर की भूख प्यास बंद हो जाएगी, जीवन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मन रुक गया है। मन कब रुकेगा? जब समय रुकेगा। समय रुकेगा तो मन रुकेगा, मन रुकेगा तो समय रुकेगा, समय रुकेगा तो जीवन रुकेगा, जीवन रुकेगा तो समय रुकेगा, जीवन रुकेगा तो मन रुकेगा, मन रुकेगा तो जीवन रुकेगा। अब अगर किसी के भी जीवन में जीवन फास्ट चल रहा है और जीवन कष्ट दे रहा है तो उसका इलाज क्या है? कौन बताएगा? जो मैंने आपको अभी समझाया, ये रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, माइंड और लाइफ। तो अभी कौन यहां बता सकता है कि अगर जीवन में कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, पीड़ा आ रही है और स्पीड से आ रही है, तो उस पीड़ा को कम करने का तरीका क्या है? आप तो सोच के बताएं। कौन बताना चाहेगा? सर, मन की स्टेबिलिटी। अगर मन स्टेबल है तो पीड़ा भी कम होगी। सर, गरिमा। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं आपको स्क्रीन में देख नहीं पा रहा था। ओके, या बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं अपने मन को स्लो कर दूं तो मेरी हाँ जी। पीड़ा भी स्लो हो जाएगी। तो मन को स्लो करने के तरीके क्या है बताइए? सर, ध्यान लगाना।
अच्छी किताबें पढ़ना। ओके ओके। अभी किसी ने लिखा कि मन को एकाग्र करना। हाँ जी। ओके, तो मन को जब आप एकाग्र करते हैं, मन को जब आप एकाग्र करते हैं तो क्या होता है? शांत होता है। शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो जीवन शांत होता है कि नहीं होता है? होता है सर। ओके, समय शांत होता है कि नहीं होता है? होता है सर। राइट। तो अभी हमको ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है टाइम को मैनेज करने का, वो क्या है? वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि सेम 24 घंटे में जब आप टाइम मैनेज करोगे तो आप ज्यादा कुछ कर पाओगे। सही है गलत जो मैं बोल रहा हूँ? राइट सर। हाँ। हाँ, तो वो हमको मशीन बना के छोड़ना चाहते हैं कि अगर ये मशीन दिन में 18 घंटे चलेगी, पीक परफॉर्मेंस पे चलेगी 18 घंटे, तो हमारे लिए काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने हमारे मन में सपने डाल रखे हैं कि मेरे को स्विट्जरलैंड छुट्टी पे जाना है, मेरे पास एक कीमती अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, The list is never ending. या तो वो कोशिश करते हैं हमको अपने गुलाम बनाने का लालच दे, और कुछ हम में से उस लालच को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। और कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं जो इस लालच के झांसे में नहीं आते। तो जो आपकी इंद्रियां हैं वो भी समय से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं वो आपके मन से जुड़ी हुई हैं, ये जो इंद्रियां हैं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो जब आप इंद्रियों पे बस करना चालू करते हो, इंद्रियों को कंट्रोल करना चालू करते हो, ये तय करते हो कि इस इंद्रिय की शक्ति मेरे को कहाँ डालनी है, तब आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तब आप अपने माइंड को मैनेज कर पाते हैं, तब आप अपने लाइफ को मैनेज कर पाते हैं। तो जो पूरा का पूरा टाइम का मैनेजमेंट है वो डिपेंडेंट आपके ऊपर है कि आप अपने इंद्रियों को और अपने मन को कितना कंट्रोल में कर पा रहे हैं। जितना आप अपने इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही समय आपके कंट्रोल में आता जाएगा। और जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो न वहां जीवन रहेगा, न वहां मृत्यु रहेगी, समय परमानेंटली ठहर जाएगा, समय जीरो हो जाएगा, समय की कोई मूवमेंट नहीं होगी, आपकी प्रेजेंस परमानेंट हो जाएगी, इटर्नल हो जाएगी, इन्फिनिटी तक आप रहेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियली द मैनेजमेंट ऑफ द सेंसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ योर माइंड। Senses management is again nothing but mind management. So mind management is the key to time management, because time and mind are directly connected to each other. If your mind is working fast, your time is moving fast. If this mind while working fast is experiencing pain, then that time you will experience severe pain in a short span of time. Whereas if that same mind, if it is working fast and is experiencing pleasure, joy, happiness, your time also will pass with very quick speed and you will not remember when that happiness started and stopped. So time इस पे भी डिपेंड करता है कि माइंड के मैनेजमेंट के अलावा वो जो माइंड में घट रहा है, जो माइंड में हो रहा है चेंज, उसको हम क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूं कि मान लीजिए एक तवे पे 5 फीट डाया का तवा है, उसके नीचे आग लगाई गई है और आपको जबरदस्ती उस पर बिठाया जाता है पकड़ के, तो वहां टाइम है ना बहुत लंबा हो जाएगा आपको, वहां का 1 सेकंड आपको 100 सेकंड के बराबर लगेगा। वही
आपको तवे पे नहीं चढ़ाया जाए, आपकी कोई मनपसंद चीज आपको दी जाए, तो वहां पर वो 100 सेकंड का समय 1 सेकंड के समान पास होके निकल जाए। आपको समझ में नहीं आएगा कि समय कैसे बीत गया। तो सिर्फ माइंड का मैनेजमेंट नहीं है, माइंड के थॉट्स का इंटरप्रिटेशन भी है कि जो उस समय घट रहा है उसका आप क्या मीनिंग निकालते हैं। आप उसका कोई बेनिफिशियल मीनिंग निकालते हैं तो टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है। आप उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट निकालते हैं तो टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है। ओके, यहां तक आप सबको अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत कुछ समझ में नहीं आया, सुना जरूर, हाँ, तो लेकिन जो आपको समझ में नहीं आया, अभी तक दिमाग में बरोबर डीप नहीं गया है। आप सवाल आपने करिए। कहा कि आपने कहा कि माइंड को कंट्रोल करने से टाइम हमारे कंट्रोल में आता है। या तो उस बात को और डीपली समझना है जरा। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सत्संग, संडे मॉर्निंग सत्संग एक ही है। ओके, और तो ये दूसरा संडे मॉर्निंग सत्संग। ये संडे मॉर्निंग सत्संग में आपका समय कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। वेरी राइट। अब आपको सब्जी बनाना आता है? आपकी पत्नी बोले मेरी तबीयत खराब है, तुम आज खाना बना के मेरे को खिलाओ। नहीं नहीं, चाय कॉफी बना सकता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो अभी समय भारी पड़ गया आपके लिए। सही बात। यस, है ना? यस यस। या तो माइंड का हम जो थॉट आ रहा है वो क्या मीनिंग हम निकाल रहे हैं, वो तय करता है कि टाइम हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि टाइम हमारे लिए एक्सपैंड होता है। हाँ, वो बात सही है। ये यहां तक समझ में आया? हाँ, ये तो सिंपल है। यस यस। हाँ, तो सेकंड, वो जो टाइम है, अगर वो टाइम में आप खुश हैं, आप आनंद में हैं, तो आपका ग्रोथ जो है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। लेकिन उसी टाइम में अगर आप कष्ट में हैं तो आपके अंदर क्या बढ़ेगा? आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, आपकी बीमारियां आने लगेंगी, शरीर अस्वस्थ होने लगेगा, सब नेगेटिव चीजें आने लगेंगी। और यस। जब जब शरीर खराब होता है, दुख में जाता है, डिजीज होती है, तो समय जल्दी पार नहीं होता है, समय बहुत स्लो 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 जाता है। लेकिन जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपको मजा आ रहा है, मान लिया आप वेकेशन पे गए हैं, ड्रीम वेकेशन पे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो 3 दिन 5 दिन 10 दिन कब बीत गए, महीना भर कैसे बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे अरे बाप रे बाप, खत्म हो गया वेकेशन। तो टाइम का मैनेजमेंट फिर किसके कंट्रोल में है? घड़ी में नहीं। टाइम का मैनेजमेंट जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने घड़ियां बना के हमारे देश में दे दी हैं और बेच दी हैं, तकरीबन हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में वो टाइम देखता है। एक जमाने में तो सब घड़ियां पहनते थे। तो टाइम घड़ी में नहीं है, टाइम आपके मन में है। आपके मन में टाइम स्ट्रेच होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट माइंड मैनेजमेंट। ओके, is this clear or this is a very revolutionary concept for you all, you know? और भी कोई पूछना चाहेगा पूछ सकता है, because unless you ask, the breakthrough, mental breakthrough will not come for you. आपको समझना बहुत जरूरी है मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आया है कि मैंने क्या बोला है, तो मैं पूरा का पूरा दोबारा समझाने को रेडी हूँ एक अलग पर्सपेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 10-12 लोग जो यहाँ पर हैं वो तो कम से कम समझें, क्योंकि अगर आप टाइम पे कब्जा कर लेते हैं तो आप मुक्ति के मार्ग पे निकल जाते हैं। अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। सर, या संगीता जी, आप थोड़ा सा कुछ बोलिए तो मेरे स्क्रीन पे आप आएंगी सामने।
Sir, Garima. गरिमा, you have a question? Yes, sir. हाँ बोलिए. Sir, the expansion on the contraction एक बार please explain कर दीजिए. देखिए, जब मैं वो काम करता हूं जिसमें मेरा मन लगता है तो समय बहुत फास्ट बीत जाता है. वहां टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और जब मेरा मन वो काम करता है जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो 2 मिनट भी भारी पड़ते हैं, 2 घंटे समान लगते हैं. हाँ, अभी आप एक एग्जांपल देख लीजिए. आप कोई गवर्नमेंट के ऑफिस जाइए कोई फॉर्म भरने के लिए और वहां लाइन लगी हो तो आपको उस लाइन का एहसास होगा रेगुलर. आपको पीड़ा होगी लाइन आगे बढ़ क्यों नहीं रही है. बीच में कोई घुस के आएगा तो शायद आप उसको रोकेंगे, भैया पीछे आओ, हम लाइन में हैं, हम क्यू में हैं, हम कतार में हैं. तो वहां वो एक सेकंड भारी पड़ने लगता है. और जहां हमको वो एक्टिविटी पसंद है जो हम करना चाहते हैं, जिससे शायद हमारी जीविका चल रही है या हमको रुपया आ रहा है, हम आनंद का एहसास कर रहे हैं, वो टाइम स्क्वीज हो जाता है, वो टाइम सुपर फास्ट स्पीड से निकल जाता है. तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट करने का सिंपल तरीका है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, अगर आपके कंट्रोल में है तो उसको चेंज करके कुछ मीठा काम कर लीजिए. और अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कुछ कड़वा काम मिल गया है, तो उस कड़वे को मीठा समझ के पी जाइए आप. तो आपका समय वापस कंट्रोल में आ जाएगा, आपको कष्ट देना बंद है. सर, ये जो कड़वे को मीठा करना है वही तो नहीं समझ में आता. हाँ, अब आप ये बोलिए कि सर जो कड़वे को मीठा करना है वो समझ में आ गया, या बोल सकती हैं? ये बोल सकते हैं कि कड़वे को मीठा करके समझ में आ गया, लेकिन जो रियलिटी होती है, जो चीजें सामने आती हैं, उस वक्त नहीं हो सकता. रियलिटी ये आपका ऑब्स्टिनेट माइंड है, जिद्दी माइंड है. और रियलिटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. नहीं, रियलिटी इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. रियलिटी इज व्हाट यू आर थिंकिंग इज हैपनिंग अराउंड यू. रियलिटी इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. वो जो हो रहा है सो हो रहा है. लेकिन जब वो आपके इंद्रियों के द्वारा आपके मन में, चित्त में आता है, तो आपके चित्त में वो जब प्रोसेस होता है, तब आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, वो थिंकिंग के बाद वो रियलिटी आपके सामने आती है. विदाउट थिंकिंग नहीं आ सकती है. तो अगर आपके थिंकिंग प्रोसेस में फ्लॉ है तो आपके रियलिटी में भी फ्लॉ है. अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस नीट, क्लीन, फ्लेक्सिबल है तो आपकी रियलिटी भी नीट, क्लीन, फ्लेक्सिबल है. और अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस पे आपका इतना कमांड है कि आपको कोई जहर दे, उसको आप अमृत करके पी जाए, जैसे शिव जी पी गए, तो शिव जी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो पी गए. वो उसको जहर समझ के पीने की कोशिश करते तो आज तक पी ही रहे होते उसको. वो उसको अमृत समझ के पी गए, मानवता के कल्याण के लिए पी गए. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रियलिटी क्या है? रियलिटी के 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज है कि आपके इंद्रियों ने क्या देखा. सेकंड है कि वो जो देखा उसके ऊपर माइंड ने क्या प्रोसेसिंग किया. तीसरा, वो जो प्रोसेसिंग का आउटपुट आया, वो रियलिटी. अभी सेम चीज मान लीजिए मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रही हैं, मेरी इंद्रियां भी सेम चीज देखेंगी जो आपकी इंद्रियां देख रही हैं, लेकिन मेरा मन उसको अलग प्रोसेस करेगा, आपका मन अलग प्रोसेस करेगा. तो मेरा मन जो प्रोसेस करेगा वो मेरी रियलिटी है, आपका मन जो प्रोसेस करेगा वो आपकी रियलिटी. समझ में आया आपको? सही समझ में आ रहा है. हाँ, और अगर आपका माइंड प्रोसेस नहीं करेगा तो आपके लिए कोई रियलिटी नहीं है वहां पर. अगर आपका माइंड कंसंट्रेशन के साथ उस डेटा को नहीं लेता है, प्रोसेस नहीं करता है, तो माइंड ने कुछ देखा ही नहीं. ऐसे जैसे बहुत सारी चीजें अराउंड हो रही होती हैं, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, तो इसका मतलब वो हो ही नहीं रही. या बट दैट इज अ ट्रुथ ऑफ फिजिकल रियलिटी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल रियलिटी. व्हाट माय माइंड इज मेकिंग अप ऑफ दैट फिजिकल रियलिटी. Are you getting me? Yeah.
Yes. So my mind is deciding the time. My mind is deciding what the time is doing to me. It is therefore not time management. Time management essentially is mind management. What are you seeing? How are you processing it and thinking about it? And what conclusions are you drawing? That decides the way the time will behave with you. या कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा बुरा वक्त आया है. अरे कहीं कहीं लिखा हुआ है क्या बुरा वक्त? कोई गवर्नमेंट से नोटिस आ गया कि आपका बुरा वक्त है? नहीं. हमारे जीवन में मेरे घर में भी कहीं चिपका हुआ नहीं है किसी दीवार पे, किसी टीवी पे, किसी कुर्सी पे कि नाउ वी आर इन बुरा वक्त. नहीं, आपके खोपड़ी में किसी ने डाला है और आप उसको लेके पका रहे हैं. जब पकाएंगे तो वही पक्का फल बन के निकलेगा बाहर और आप फिर खुद भी कन्विंस हो जाएंगे कि ये वक्त मेरा नहीं है, औरों को भी कन्विंस करेंगे बॉस मेरा तो बुरा वक्त चल रहा है. So you have to remember, everything is the mind. Everything is in the chitta. The outer reality is a different reality for you and a different reality for me, because two of us have different chittas. We have different experiences in life. We have come from different karmic accounts. We are going in different directions further ahead. So how can that reality be the same? समझ में आ रहा है कि हम बहुत profound discussion में घुस गए हैं. I really don't know, you know. I have to speak as per your ability to understand. If you're not able to understand, please ask me questions. I will go down a bit and start again if need be. Right? So I just have a question. Yeah. Now, so if you say, that time has passed, like last year has passed very quickly. So does that mean that, you were in a very happy state of mind? What does that? Okay. You see, when we have painful memories, then that is what allocates the time dimension to it. Okay. If you have pleasant memories, then you don't feel the sense of time. But if you have hardships, difficulties, troubles, you go through tremendous pain, suffering, earning problems, health problems, somebody has died in the family, then those kind of things don't go away easily. So the time gets stretched there. Right? Right. No, like, a lot of us, when we talk, we say, last 1 year, 2 years, 5 years, whatever, have ended very fast. So Vinay, I'm stopping you. Okay. Do not talk to me in the form of we. Talk to me in form of your personal experiences. Okay, I'm talking from if I say that, last 2 years have passed very quickly. So for me, it is a negative connotation, actually, I'm saying. You are free to have your connotation. I'm not here to change your connotation. You are free to have your connotation. Right. I'm merely answering the topic which was given to me by Krishna. And I'm giving my what I'm trying to say is, when I say 2 years pass quickly means actually I've not done much. It has moved very fast. This is my thought. When I say this, that's all right. You see, you must understand, all of us cannot be right and all of us cannot be wrong, but all of us can have views on the same subject from different directions, different experiences. So if you have that kind of association in the mind, the last year was passed away easily, so must have been a good year. Fine, you are welcome to have that. We have to realize that we are independent of each other. We have to realize that our minds are our own. We have to realize we have to do our mental work ourselves. Nobody else is going to do it for us. Okay. No coach will do it for you. No trainer will do it for you. Everything has to be done by you. What you can do is pick the right knowledge so that your processing becomes easy. Right? Do you have any in questions? This scenario, in this situation which I've shared with you, so how do I reduce the speed, of time, how do I change my thinking slow? How do I slow my thinking? What is the way out? Yeah, I mean, there are various methods. One method which was explained there is concentration and dhyan, When you bring your mind to one place, then you're moving your mind away from those other places where it was stuck.
So when you bring your mind to one place, then you start liking that place. Okay, initially you might not, but eventually you do. And then time starts coming under control. You see, what is time? Time is change. So when your mind is at 100 places are changing. So your mind is going through a change faster. But if you are operating at one point and focusing on one point, one thought, one feeling, one emotion, one object, so there is no change. You have intentionally put your mind into a no change zone. So when you intentionally put your mind into a no change zone, into a one pointed zone, into concentrated zone, into the zone of meditation or samadhi, so that is the way you control time, because now you are controlling change. So when you are controlling change with your mind, you're controlling time also with your mind automatically. Are you getting me? That is why in meditation at times people do not know how much time has passed. People who are regular meditators, they at times do not know how much time has passed. For them, 20 minutes passes in a second. And somebody who has never meditated, he might have difficulty. He might get up after 2 minutes. So it is the power of the mind to hold itself in one position so that it does not change. And then you control rajas, the changing factor of prakriti. And then you control time, the changing factor associated along with prakriti. Are you getting me? Yeah, right. Good. Thanks. Welcome. There was a question from, I think, Nageshwar Rao. Just a sec, let me open up the chat. What factors you need to go beyond time? I think he wants to go into Ananda, if I read correctly. Just a second, I cannot read your question completely. Okay, so you essentially want to know how to experience Ananda, right? You see, Ananda is the fifth destination, is the fifth step on the ladder of life, is the fifth step in which only few people reach, very few. What is the first step? In first step, we see the reality of the objects outside with our mind. So our mind gives us inputs, this is a car, this is a pen, she's a lady, she's an old lady, she has white hair. Now none of this is actually coming from the sense organ of the eye alone. It is coming from the combination of the sense organ and the mind. So it is your mind which is defining what is a car, what is a pen, what is a lady, what is an old lady, what is hair. Now this is a confused state of observation, of concentration, of samadhi, of consciousness, of awareness, of reality. Because in society, we have been taught, what does a car look alike? So if you get that kind of an object, you think it is a car. And we have been told by our teachers, by our parents, by the society, what is a pen? How does it look? What is its shape? So when I look at that shape, I say, oh, it is a pen. Our society, our teachers, our parents have taught us who is a lady. So looking at something from the eye, we come to the conclusion, lady, old lady, white-haired lady. The eye does not know what is the color white. What does white mean? What does hair mean? What does old mean? It is merely working like a camera. It is just clicking images. But the mind is continuously making sense out of those imagery and telling you there's a car, there's a pen, there's a lady, old lady, and black hair. This is confused concentration. This is mixed concentration. Because this creation has three distinct realities. One is the spirit, second is the mind, and third is the physical outside. So the physical is not the mind, and the mind is not physical. Mind is not the brain, and brain is not the mind. Okay?
So you have an object, you have a subject, and you have a spirit from which the subject and the object are coming out. But in the first level of observation, which we automatically open our eyes as babies, and we see ourselves as, you can say, words connected to that object. So every object you find in your universe, in your planet, in your home, or in your office will have a name. You cannot find a single nameless thing in the world. You cannot find. I'll give you a challenge on that. You cannot find even a single unnamed star in the sky above. You cannot find a single unnamed fundamental particle in creation. Everything has a name or a number. Everything has an identification. But when you are talking about the identification, that is not the object. It is the name of the object. So the name does not mean everything about the object. Knowing the object in totality is knowing everything about the object, where name is one single parameter of it. But what we do is we carry a lot of data, memories inside our head. And when the name comes, which again comes from the mind, so we bring about some stories about that name, experiences about that name, expert advice which we have seen or received, and we club all that and we make the observation. So this is a limited observation. And people who have limited observation are trapped in limited worlds. They are not world leaders. They are essentially supervisors or managers or owners of small businesses or working in small companies. But people who can see an object without the mind is a higher power. So he has the power over the mind. When he wants to see without the mind, he can switch off the mind. When he wants to see with the mind, he can switch on the mind. Okay. So the object reality outside is finite. So you have to see the finite very, very clearly. So the third step is, now you see that finite object with the infinite power of the mind, with the infinite power of reflective thinking. What was first happening was seeing. Now you're in the thinking stage. You have gone deep. You have moved from the physical to the mental world. Now you're thinking about it. So you can think of many pens now. You might probably think of 1,000 pens. You might think of 10,000 colors for the same pen. You might think of 10,000 different kinds of inks coming out of the same pen. You might think of infinite sizes of the pen, infinite materials for the pen. You know, infinite height, infinite length, infinite breadth, infinite weight. Because now the mind is quietly, calmly reflecting on that object which it has caught in isolation. Just a simple object. So now you have a universal mind. And even this universal mind, which is operating out of thinking. So then you stop thinking. So first was seeing, seeing with the mind, seeing without the mind. Third is thinking. Fourth is being. Just be there. Don't think. Don't exercise the mind, but just be there. We are called human beings. Who stands for God, the Spirit. MAN stands for man. The man who has God in him will just be. He will be a being. He'll not be a doer. He'll not be doing. He'll not be feeling. He'll not be thinking. He will be being. Because the divine element has come in him. He is you. Man is man. Man is mind. You, man, being is in a state of being. It is in continuation. It is not stopping anywhere. It is flowing. When you reach this state, then you are operating from the cosmic mind stage, where everything is like a cloud, where everything is an experience of awareness, an experience of consciousness. There is no thinking, there is no seeing, there is no doing, there is no feeling.
just being. And when you reach that state, the being state, then you feel Ananda. Ananda happens after this. And when you reach Ananda, and you are in that Ananda domain for a long time, you're not falling back into the earlier 4 stages. You are staying in the 5th domain of the Ananda. Then you experience true bliss. Then whatever is coming from the world outside is a blissful experience for you. Somebody on the street might come and slap you, but it does not affect your inner mind. You are beyond the mind now. You are in the being stage. You are in the blissful state. You might just smile back at him. You know, the way I think Christ said or Gandhi said, can't recollect, कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे दोगे. Yeah, so that is the above the being state. That is the Ananda state. And once when you are in Ananda, then Ananda will slowly subside. And the Ananda is the sattvic element. So the sattva will subside. And you will reach a state of no mind. Because you have seen the physical mind, you have seen the mental mind, you have seen the being mind, you have seen the bliss mind. Now you reach a state of no mind. Yeah, can somebody switch off the mic, you know, because it's the story. Okay, it's gone. Yeah. So, there what do you see now? There what do you see now? There you see yourself. Initially you saw the object in a specific one form. One car which I showed you, one pen which I showed you, one old lady which I showed you. Then you move to universal. You are able to see all ladies in your mind. You're able to see all cars in your mind. You're able to see all pens in your mind. Based on what? Based on past memory and imagination. You get complete knowledge of that universe. Now when you go further up, you leave the thinking also, the feeling also, the doing also, the seeing also. Now you are only in the being state. When you are in the being state, then the whole cosmos opens up for you. And then you go into Ananda, and then you go into no mind. So what happens is, when you start at the first end, their time is present as per the standards set by the European scientists. There that time is working. But as you move in, the power of that outside mind, the outside time is diminishing. Now you are taking over control of your time. So in Ananda, there is no sense of time. In no mind stage, when you are in the Mool Prakriti stage, that is the no mind stage, where all the 3 gunas, sattva, rajas and tamas, have come into equilibrium. That you cannot notice any change. Though change is happening inside, but you are unable to perceive that, unable to see that. Only a yogi can see that with this intuitive power of the mind. The normal man will not be able to see the Mool Prakriti. So now he has reached a no mind stage. And when he has no mind, that means there is something which is pure mind, which is not no mind. There is something which is the Atma, the Purusha, the soul. So then you reach the state of the Atma, Purusha or soul, which is Kevalya, which is Moksha, which is Nirvana, which is freedom, which is liberation. So all of us have to go through this journey from the physical world outside, into the mental world inside, into the spiritual world behind the mental world. And as you go in, the power of time over you will keep on diminishing. This is the yogic time management. It is not the Western world's time management. We are discussing time as per our ancestral knowledge, as per the knowledge of our ancients, as per the knowledge of our rishis and munis, you know. That is why they say there are people who could live for 200 years, 500 years, because they are operating from a deeper consciousness. So the outside physical time is not having an impact. And then we say there are certain people who will never die, who are always there amongst us. Every Sunday from 10 to 11:30, you have class every Sunday.
the other class for some time, this extra class, if you could not understand. Okay, so okay, so we need to understand the yogic concept of time. We need not understand the Western world concept of time. That time concept is put around our necks when we are babies. You know, we have to get up at 8, get ready by 9, school starts at 10, you'll be back at 4 o'clock. How many hours will you put for studying physics? How many hours for maths? You have to set a timetable. You have to, you know, this timetable concept, the scheduling concept is a very limited concept because it is operational only in the lowest samadhi, lowest dhyan state, lowest state of awareness. So the Western world is in the lowest state of awareness and they have no idea about the higher states. Whereas we have that knowledge, we need to learn it, we need to apply it, we need to put it to good use. You know, that is our ancestral, you can say, treasure. It's a dhan which has been given to us. So we need to learn, practice and use it and then see what magic happens in your life. You see, we normally see time as a change between two states. You know, if A is one state and B is the other state, then the time it takes to move from A to B is time. But if I tell you, you can go from A to B directly within a split second, then there is no time, right? So is it possible to change my life from where it is today to an advanced stage in no time? Yes, you can do it, provided you start controlling your mind. Your mind is the steering wheel of time. Your mind decides how much time you will take to do a thing. Your mind decides whether you will be able to do it or not do it. Your mind decides whether you like certain activity or you don't like it. Your mind has to decide that it has to go deep inside itself to open up the treasures for you. Your mind has to take a call that it wants to go in moksha. So when that moksha becomes the thirst, all these will happen automatically. The Ishvara, the Adi Guru inside you will arise, will show you what you want. But we are not telling this creation what we want. We are asking petty things. बच्चे का एग्जाम पास करा लेना, मेरे माँ की तबीयत ठीक कर देना. So he's doing that and you're happy with that. He's also happy with that. Yeah, any questions? Yes, I have. See, what you said is that through control over our mind, we go spiritually higher and finally reach moksha. But by controlling of our mind, can we make our worldly progress faster? Yes. Like managing our time, yes, work-wise, yes, worldly input-wise, yes, can we improve our performance? Yes. Say if I have to do 10 types of work, normally I would take 2 days about it. How can I do it faster? By controlling my mind. You have to control your mind. Yeah, but how can I? We just discussed concentration. You can practice concentration. You can practice a lot of things. You can practice getting devoted to a God. You can read scriptures. You can practice detachment, vairagya. There are various ways to do it. So unless and until you want it as a burning desire, that way will not come in front of you. It is not a talk of a casual conversation. You know, it has to be done in all depth. You just take a decision. Okay, by controlling our mind, we can even do our day-to-day work. Your day-to-day work will become better. Okay, so that's what I just wanted to ask you. Okay, you just see Ram, okay, Lord Ram. 2 brothers, okay, exiled. Yeah. Were able to enter Sri Lanka and demolish the demon king Ravana in his own house. 2 people. True. Right? So that is the power which your spirit gets. And the spirit, once it has the power can be seen only when it flows outside. It cannot be seen inside your head. You can't put a meter to it and check. Kitna mera spiritual power hai. But if that spiritual power has come in, you have been able to open the gates. You have done the sadhana, the tapasya, the practice to reach there. You will find it just moving out into the world and doing whatever you want.
Whatever you want. You want to become the world's richest man? It will make you. But first you have to surrender to it. Reach that state. Without reaching that state, if you attempt to do it, it will simply not happen. You have to realize spiritual energy is the key energy. Spiritual energy gives you mental energy. Mental energy gives you physical energy. To work in the physical world outside, you need energy. That energy comes from the mind. Higher the mind, more that energy. Lower the mind, lower the energy. So I just can't understand. People keep on asking this question quite often, you know. I was at a corporate meeting yesterday, and the owner of that firm, he runs 3-4 businesses. He asked me, Sanjay, लोगों को मोक्ष मिलेगा तो फिर काम तो करेंगे नहीं, you know? Worldly question. Yes. It's a very stupid question. Though I was there as a guest, I didn't tell him that on his face. I'm telling you, it's a stupid question. Why is it a stupid question? Because mind is like a ladder. When you're operating on the lower levels, you have lower powers. When you go to the higher levels, you have higher powers. So where will you use these powers apart from the world outside? Am I right? Have you got me? You know, we tend to believe that the world outside is different, my mind is different, and the spirit Atma is different. Yes, they are different, but in your body, they all have come together. They are operating together. You have a Purusha inside you, you have the Prakriti inside you, and you have the world of matter. You are there inside that world yourself. Your body is there in that world, the physical world. You're not a bhoot. So any achievement in the mental field will give you a corresponding achievement in the physical field outside. People who do not want to work hard inside come up with these stupid excuses. If you have the ability, the guts, and the determination to take that decision and work inside, you will be a changed man in 3 months. People will come and ask you, what have you done? But that requires effort, that requires time, that requires commitment, that requires taking a decision in the first place, which we don't take. You decide that you have to become the richest man in your state. And keeping that objective, you start working on your mind. Let me tell you, it will happen automatically outside. You can stay inside your room for 3 years. Don't move out. Just hold on to this thought and keep on elevating your mind. You will find the world outside that you have, by some unknown reason, you are the richest man of the state. But you will not believe it because you have been conditioned to think we have to work with the body to earn money, and the work has to be hard work. And some people have coined smart work. Hard work and smart work will take you nowhere. Only godly work will take you anywhere you want. People don't seem to understand this. You know, there are thousands and lakhs of temples out here in our country. People go there, but their belief system is superficial. If you ask any of these people who go to the temples, are you surrendered to Vishnu? Are you surrendered to Ram? Are you surrendered to Krishna? And if he says yes, give him a knife and tell him to chop off his head. He will run away from there. So Samarpan means complete Samarpan, 100%. That is when the ego dies. But if you are not willing to kill your ego, don't expect God to work for you. So now once when you're managing your mind the right way, you're managing time the right way. What was supposed to happen in 2 years will happen in 20 days. Try it out, what I'm telling you. People then ask me, how do I surrender? Very good question. If you want to know how do you surrender, that means you're not loving the God you want to surrender to. If a person does not know how to surrender, I can tell you, his business is in a mess. His relationship with the wife and kids is in a mess. If you cannot surrender to another, how can you surrender to God? If you can't accept the other in totality, believe him 100%, then who will believe you 100%? Nobody. To get back what you sow.
If you tell Krishna, I am not there, only you are there, then Krishna will ask you, what do you want? So Arjun told him, I want to win this war. Is it fine? Let me drive. You do whatever I tell you. So Arjuna agreed. And who won the war? Pandavas won the war. Not the Kauravas with the huge armies. Who won the war in Sri Lanka? Ram won the war with a bunch of monkeys and animals. It is not what is happening outside which will decide your future. It is what is happening inside your head which will decide your future. Not the world outside, not the house you stay in, not your wife, not your children, nor your bank balance, nor your number of factories, industries, cars, possessions. None of it will decide your future. Let me tell you that. They are simply objects. They will come and go. Your future will be decided by your mind. Now the question is, who is controlling your mind? If you are controlling your mind 110%, you will be in Ananda in no time. Wherever you touch will become gold. But you will not believe me, because you have seen the world outside and you think what they are saying is all fine. Perfect. You follow them. In one of the groups yesterday, one of my friends told me, you're forcing your views on us. I told him, I'm not forcing it. I'm just giving an option. If you like it, take it. Don't like it, don't take it. Or if you have some feedback, give me feedback. Or if you want to ask questions, ask questions. I'm not running away from questions. I'm saying ask any question you want. But understand the fact. Time is a myth. Just because you see a clock doing tick, 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 that does not mean time exists. Time will exist for those people who are at the lowest level of the ladder, the mind ladder. And time will not exist for those who are on the topmost level of the mind ladder. So you choose where you want to be. Is it clear, or am I making some nonsense out here? It's very clear. Yeah, any more questions? Sir, हाँ बोलिए. How to? नहीं, मैं आपका आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा. How should do? नहीं, how should do what? आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर लेंगे. नहीं, मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आप अपना क्वेश्चन एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए. सर, माइंड पे वर्क करना है. सुन रहे हैं आपको? आवाज कट जा रही है. आप में से कोई सुन पा रहा तो मेरे को बताइए. व्हाट शी इज आस्किंग. नहीं, even I'm not hearing. नहीं सर, आवाज नहीं आ रही. ओके. आप शायद जहां पर हैं वहां पे सिग्नल कम है. एक सेकंड. आया आपका? Yeah, anybody else? Any question? Now can we make this change? Yes. आप भक्ति भाव में आ जाइए ईश्वर के प्रति, और भक्ति का डेली कुछ एक्शन करिए, कुछ रिचुअल करिए, तो आपकी भक्ति अंदर बढ़ने लगेगी. आप ध्यान का प्रैक्टिस करिए तो ध्यान की शक्ति अंदर बढ़ने लगेगी. आप वैराग्य का प्रैक्टिस करिए. डोंट गेट अटैच्ड टू एवरीथिंग यू सी आउटसाइड. Few things is all right, but don't get obsessive about certain things, or don't hate certain things. बीच का पाथ लीजिए. Not be very extreme left, extreme right. तो आप देखेंगे कि आपका माइंड अपने आप एलिवेट होने लगेगा. एक आप ओम का चांट सुन सकती हैं, तो मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को बेनिफिट मिलता है.
बहुत, तो वो चांट कर सकती है या सुन सकती हैं, उससे भी आपका माइंड हायर लेवल्स में चला जाता है, फुल ग्रो करके मोक्ष तक ओम चांट भी आपको ले जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको 3-4 स्टेप्स करने होंगे, और लेकिन फिर उनको हमेशा करना होगा, ये नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। आपको हमेशा करना होगा, और 1-2 मेथड्स ही चूज करिएगा, मेन मेथड्स, बाकी सब्सिडियरी मेथड्स रखिएगा, तब आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। Thank you. Welcome. Any other question? No? 4956. Sorry. Yeah, so can we close there, huh? Yeah, I think there nobody seems to be having any question. 56. So, 4956. yeah, so we will do the closing now. I will just summarize what we have discussed. Time is connected to mind. Mind is connected to life. The moment I control my mind, I control both my life and time. When my mind goes to the higher states, time becomes of lesser and lesser importance, and eventually time disappears. Hindu. And then eventually time disappears. एक मिनट. Sorry. When I am putting you on mute, huh? Okay. So eventually time will disappear. And we start normally our life by seeing, but seeing both the object with the mind. Then we have to just see the object and just think about the object, and then stop thinking also about the object. We simply are in the being state, and then you enter Ananda, and then you enter the self state, where you see yourself, where you see your Atma, your Purusha, your soul. That is the self-realization, soul realization stage. And then you are a free Atma, a free Purusha, a free soul, and you reach infinite proportions of pure consciousness. So all these powers of power, knowledge, innovation, living for eternal time, all these start coming in, and you are in a state of absolute bliss, and that is the highest state of evolution to which a human being can go. So that simply is today's talk summarization. I thank all of you for being here and giving your valuable time and asking questions. If you wish to spread the word, then you can invite other people also. If you have any questions, feel free to send those questions to us. We will try to do a whole session on those questions, so that we are able to impart the right kind of knowledge, which we think is right, which we think is appropriate to you all. But you don't accept it the way we are giving it to you. Apply your mind to it, work with your intelligence, come to a conclusion, and then adopt it. That is the way it should go. So right then, thank you so much. God bless each one of you.